Hello students, today we will start nervous system. So in nervous system, you all know we will discuss about the brain and the function of the brain, and the brain which will be divided majorly, it will be divided in two types, that is central nervous system or peripheral nervous system. So we will deal with these all things. So the nervous system provides the body with a rapid means of internal communication that allows us to move about, talk, and coordinate the activity of billions of cells. Thus, neural activity is critically important in the body's ability to maintain homeostasis. Means the nervous system which will be provide body with a rapid means of internal, means the nervous system which will be responsible for rapid means of communication, means it will be maintaining the communication. If the brain which will be disturbed, or if the brain which will be damaged, in that condition the body which will be not able to do the proper functioning, and it will be not maintaining the proper communication. Means the person who are having the problem of this brain disturbances, in that time the patient communication which will be also disturbed. Means the patient is not able to talk properly, the patient is not able to coordinate the activity of billions. Means in this there will be billions of cells. So if the brain which will be, or the nervous system which will be affected, in that condition the billions of cells which will be affected, and it will be affecting the talk, coordination, or many body function. So this neural activity is critically, so the neural activity it will be critically important in the body's ability. बॉडी में जो ability है या एबिलिटी टू मेंटेन, जो होम्योस्टेसिस होता है, होम्योस्टेसिस मीन्स इट इज द टेंडेंसी टुवर्ड्स अ रिलेटिवली स्टेबल इक्विलिब्रियम, मीन्स इट विल बी मेंटेनिंग अ इक्विलिब्रियम, मतलब बैलेंस को बनाने के लिए जो होम्योस्टेसिस है वो हमारे बॉडी में जरूरी है. इफ द पेशेंट होम्योस्टेसिस विच विल बी नॉट मेंटेनिंग, इन दैट टाइम द पेशेंट विच विल बी नॉट एबल टू मेंटेन द इक्विलिब्रियम. दोनों बराबर वो पेशेंट खड़ा नहीं हो पाएगा, जो भी एक्टिविटीज है वो पेशेंट नहीं कर पाता, स्पेशली एज मेंटेन बाय फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस. जो हमारे जो फंक्शंस है इट विल बी अफेक्टेड. सो this is about nervous system. Means the nervous system which will be responsible for these all things. Then general nervous system function, हमारा nervous system में जो general functions है वो क्या है? The nervous system is the body's means of perceiving and responding to event in the internal and external environment. मतलब हमारे body में जो भी internal या external environment है उसमें जो भी events होते हैं उसको वो क्या करता है? affect करता है. So the receptor is capable of sensing touch, मतलब in our body there will be some receptors which will be capable of sense. Means in our body there will be some sense organ, like anyone if anyone they any individual, they if he or she touch to any other person, in that time we feel that sensation. वो sensation हम feel कर सकते हैं that the patient is having the person is having pain. If any pain is there, temperature changes, if the temperature which will be increase in our body or it will be decrease in our body, so in that time we will feel these all things. So it will be affected by or responding by the nervous system of our body. So the nervous system is also responsible for storing experiences. Means it will be also experiences the memory and establishing pattern of response based on previous experiences. That is called as learning. Means with the help of brain only. अगर हमारा brain अच्छा है तो in that time our memory which will be also लॉन्ग टर्म मेमोरी, मतलब ब्रेन ही ऐसा है जिसमें हम जो भी हमारी मेमोरीज होती है उसको हम लोग स्टोर करके रखते हैं. इट विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टोरिंग द एक्सपीरियंसेस, जो भी हमारे एक्सपीरियंसेस हैं, प्रीवियस एक्सपीरियंस, जब हम छोटे थे तो क्या है, कुछ कुछ ऐसी मेमोरीज होती है जो हमारे ब्रेन में मतलब स्टोर रहती है. एंड एस्टैब्लिशिंग पैटर्न ऑफ रेस्पॉन्स बेस्ड ऑन प्रीवियस एक्सपीरियंसेस. मीन्स विद द हेल्प ऑफ ब्रेन ओनली वी विल लर्न मेनी थिंग्स. बहुत सारी चीजों को हम लोग सीख सकते हैं. Then summary of function of the nervous system, means it is a short function of the nervous system, that is control of internal environment. Means it will be control the internal environment. Nervous system work with endocrine
सिस्टम, जो हमारा नर्वस सिस्टम है वो किसके साथ वर्क करता है, इट विल बी वर्क विद द एंडोक्राइन सिस्टम। देन वॉलेंट्री कंट्रोल ऑफ मूवमेंट, हमारे बॉडी में जो देयर विल बी टू मूवमेंट्स, दैट विल बी वॉलेंट्री मूवमेंट एंड इनवॉलेंट्री मूवमेंट। वॉलेंट्री मूवमेंट मीन्स द मूवमेंट विच विल बी परफॉर्म बाय आवर सेल्फ, जो मूवमेंट हम खुद से अपनी इच्छा से परफॉर्म करते हैं, दैट इज वॉलेंट्री मूवमेंट। बट इनसाइड आवर बॉडी आवर हार्ट इज फंक्शनिंग, आवर लंग्स इज फंक्शनिंग, दैट इज कॉल्ड एज इनवॉलेंट्री मूवमेंट, मतलब वो अपने आप जो है वो चलता रहता है। सो programming of spinal cord reflexes, then it will be also programming of spinal cord, हमारे जो spinal cord reflexes है उसको ये programming करता है। if the brain which will be damaged, then the reflexes which will be also affected. then assimilation of experience necessary for memory or learning, मतलब हमारे memory में हम लोग जो भी चीजें सीखते हैं उसको हम लोग with the help of assimilation of experiences, मतलब हमारा जो experience है हम लोग क्या करते हैं, we have to learn the we have to do memory और learning, मतलब हमारा जो experience है उससे हम लोग आगे सीखते जाते हैं, हमारी जो memory है वो आगे बढ़ती जाती है। Then next is there will be many classification of the nervous system. So the nervous system, basically the nervous system which will be majorly, it will be divided in two types. So that will be central nervous system and peripheral nervous system. So under central nervous system, the brain which will be comes, and again the brain which will be again divided in three or four types. Then next is the spinal cord. Then in peripheral nervous system, it will be again the subtypes, that is sensory or motor system. So what is sensory? So it will be responsible for transmission of neuron impulses from sense organ receptors to the CNS. These sensory fiber which conduct information toward the CNS are called efferent fibers. मतलब ये जो sensory है, it will be responsible for transmission. In previous class we have already discussed about the neuralgia and neurons. So it will, this sensory which will be responsible for the ट्रांसमिशन ऑफ न्यूरॉन इम्पल्सेस, मतलब ये जो न्यूरॉन इम्पल्सेस है उनको ट्रांसमिट करने के लिए ये रेस्पॉन्सिबल होते हैं। एंड वेयर इट विल बी ट्रांसमिटेड, सो इट विल बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम द सेंस ऑर्गन्स टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम से ये हमारे सेंस ऑर्गन्स में ये क्या होते हैं, ट्रांसमिट होते हैं। दीज सेंसरी फाइबर्स विच कंडक्ट इंफॉर्मेशन टुवर्ड्स द सेंट्रल नर्वस सिस्टम आर कॉल्ड एफेरेंट फाइबर, मतलब जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में जो एक मतलब जो सेंसरी फाइबर्स है जो which will be sending the information towards the central nervous system and peripheral nervous system are called efferent fiber. उसको हम लोग क्या बोलते हैं, it is called as a efferent fiber. Then next is the motor nerves fiber that conduct impulses away from the central nervous system are referred to as efferent. वो था efferent और ये है efferent. मोटर नर्व फाइबर्स जो होते हैं ये क्या करते हैं, दे कंडक्ट इम्पल्सेस, मतलब ये जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसके अवे होते हैं, उससे दूर होते हैं और ये इम्पल्सेस को जनरेट करते हैं, आर रिफर्ड, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड एज अ efferent fibers. मतलब वो efferent था जो क्या कर रहा था, it will be maintaining a connection between the central nervous system and the peripheral nervous system, but in motor nerve fibers it will be conduct impulses away from the central nervous system. मतलब ये central nervous system से away दूर impulses generate करते हैं and it is called as a efferent fibers. Then the motor nerve fibers which will be again divided in two types, that is somatic or autonomic. And what is somatic? So which innervate skeletal muscles, मतलब somatic जो है वो क्या करता है, it will be responsible for transmission of or the generating the function or impulses of the skeletal muscles. Then autonomic which innervate involuntary effector organ like a smooth muscle in the gut, मतलब ये वो जो है वो किसके लिए responsible है, it will be responsible for the skeletal muscles, है ना, somatic. but autonomic जो होते हैं which innervate से, ये जो है वो क्या करते हैं, हमारे बॉडी के जो organs है उनको सप्लाई करते हैं. innervates means it will be supplying
एन ऑर्गन और अदर बॉडी पार्ट विथ नर्व्स, मतलब ये हमारे बॉडी के अदर बॉडी पार्ट्स को या विद द हेल्प ऑफ नर्व्स ये क्या करते हैं, क्या बोलेंगे, इम्पल्सेस जनरेट करते हैं और उनको सिग्नल भेजते हैं. सो विच इनरवेट्स इनवॉलेंट्री इफेक्ट. मैंने अभी बोला इनवॉलेंट्री मीन्स क्या है, जो हमारे जो कार्डियक मसल्स फंक्शन कर रहे हैं, ग्लैंड्स जो है वो मसल कर रहे हैं, सॉरी फंक्शन कर रहे हैं. सो विच इनरवेट्स involuntary effect or organ like a smooth muscle in the gut, cardiac muscles and glands. Then next is the autonomic. Autonomic is again divided in two types, that is sympathetic and parasympathetic. So this sympathetic and parasympathetic, it will be discussed in next classes because it is a very big topic. ठीक है. Then next we will start from the brain. अब हमने देखा कि there will be two major classifications, central nervous system and peripheral nervous system. Then again the central nervous system, it will be divided in two types, that is brain and spinal cord. So first we will deal with brain. So what is the structure of brain? So the adult human brain with an average of 1.4 kg, ये जो हमारा adult ब्रेन का जो साइज होता है, इट विल बी 1.4 kg और अबाउट 2% ऑफ द टोटल बॉडी वेट. हमारा बॉडी का 2% जो है, क्योंकि बोलते हैं द ब्रेन विच इज द लार्जेस्ट ऑर्गन इन अवर बॉडी. सो डिस्पाइट दिस रिलेटिवली स्मॉल मास, द ब्रेन कंटेन अप्रोक्सीमेटली 100 बिलियन न्यूरॉन्स. हमारा जो ब्रेन है उसमें approximately it will be 100 billion neurons which will be present in our brain, and it will be functioning as a unit. These neurons make up the most complex and high organized structure on the earth. So it is functioning, ये एक unit के जैसे काम करते हैं. So these neurons make up the most complex and highly organized structure on earth. मतलब इनका जो structure है, जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, what is neuron, what are the function of neuron, what are the characteristic of neuron. So the functioning as it means the brain, it is function as a unit, एक यूनिट के जैसे काम करता है, जिसमें जो न्यूरॉन्स है मेकअप द मोस्ट कॉम्प्लेक्स, मतलब ये मोस्ट कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है इसका, हाईली ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर, और इसका जो स्ट्रक्चर है वो बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज है ऑन अर्थ. Then the brain is responsible for many of the qualities that make each individual unique: thought, feelings, emotions, talents, memories, and the ability to process information. Means the brain is responsible for many qualities. मतलब हमारे अंदर जो क्वालिटीज है उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? इट विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द ब्रेन. ये ब्रेन की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हर एक इंडिविजुअल, ईच इंडिविजुअल, they have unique characteristic or unique qualities, such as the two individual, they have different thoughts, they have different feelings, they have different emotions, they have different talents, they have different memories and the ability to process information. Then much of the brain is dedicated to running the body. हमारा ब्रेन का जो मतलब ज्यादा जो पार्ट है वो हमारे बॉडी को रनिंग करने के लिए रेस्पॉन्सिबल है. द ब्रेन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग होम्योस्टेसिस by controlling and integrating the various system that make up the body. Means the brain which will be responsible, जो brain है वो किसके लिए responsible है? It will be responsible for maintaining the homeostasis. Means कैसे ये maintain करता है हमारे body में homeostasis को? By controlling and integrating the various system that make up the body. जो हमारे बॉडी को क्या करता है? बनाता है. उस सिस्टम को ये क्या करके रखता है? मेंटेन करके. मतलब हमारे बॉडी में जो इक्विलिब्रियम है उसको मेंटेन करके रखता है, हमारे बॉडी के इक्विलिब्रियम को, एंड इट विल बी आल्सो मेंटेन द फिजियोलॉजिकल प्रोसेस. Then covering of brain. So in covering the meninges membrane surrounding central nervous system, it will be the meninges, it is the outer covering of the central nervous system. There will be three layers होते हैं इसमें meninges में. First is the dura mater, that is outer tough layer. Then second is the arachnoid matter, that is thin or web like structure. Web like मतलब क्या बोलेंगे उसको हिंदी में? ये वेब लाइक स्ट्रक्चर होता है, मतलब जले के समान होता है. देन पायामेटर, दैट इज इनर और वेरी थिन, ये सबसे अंदर होता है और बहुत थिन होता है.
So this is in whenever we will discuss about the brain or nervous system, so it will be start from skull, then this is cranium, then cerebrum, then cerebellum, then there will be vertebra, then spinal cord, means we will discuss about the spinal cord, then this is meninges. Then here there will be three, that is in meninges. So there will be three layers, that is dura mater, this one is arachnoid matter, and this one is pia mater. So this is the outer covering of the central nervous system. ये central nervous system का ये वाला जो part है वो क्या है, outer covering है. और इसमें क्या है, this is the dura mater, ये this one is dura mater, this one is arachnoid matter, and this one is pia mater. Then next, what is pia mater? So this pia mater that is closest to brain and spinal cord. ये सबसे brain और spinal cord के closest होता है. It is a delicate tissue. ये जो tissues है, इसमें जो tissues से ये बना होता है, that is a delicate tissue. It covers all areas of brain and spinal cord. ये हमारे brain और spinal cord के all areas को cover करता है. Very वेस्कुलर, इसकी जो वेस्कुलैरिटी होती है वो बहुत ज्यादा होती है. इट सप्लाई सुपरफिशियल एरिया ऑफ द ब्रेन एंड इट विल बी प्रेजेंट इन द सुपरफिशियल एरिया ऑफ द ब्रेन, क्योंकि ये जो मेनिंजेस में जो पायामीटर है वो ऊपर आउटर कवरिंग है, सॉरी इनर कवरिंग है. Then next is the arachnoid membrane. So arachnoid membrane, it is the middle layer. So it is spider web like, मतलब ये मकड़ी के जाले के समान होता है. And it covers inner dura. जो inner अंदर का जो ड्यूरामीटर है उसको वो क्या करता है, सॉरी ड्यूरामीटर के इनसाइड रहता है. ड्यूरामीटर जो है इट इज द आउटर पार्ट है ना, सबसे बाहरी वो होता है. So then suspends brain in cranial cavity, collagen and elastin fiber. ये किससे मिलके बना होता है? It will be made up of collagen and elastin fiber. It is separated from pia mater through subarachnoid space. मतलब ये क्या करता है, pia mater और subarachnoid जो space होता है उसको वो सेपरेट करता है, और इसके अंदर में CSF और कुशन्स ब्रेन जो है वो प्रेजेंट होते हैं. The next is the durameter. Durameter that is outermost covering of the meninges. Meninges का जो outermost covering है that is durameter. It is thick double layered membrane. ये कैसा होता है, thick होता है और डबल लेयर मेम्ब्रेन है. लाइंस द इनर सरफेस ऑफ क्रेनियल कैविटी. और ये कहाँ पे प्रेजेंट रहता है, इट विल बी लाइंस द इनर सरफेस. जो सबसे इनर सरफेस, किसका इनर सरफेस, जो क्रेनियल कैविटी है उसका जो इनर सरफेस है वहां पे ये प्रेजेंट होता है. देन नेक्स्ट वन इज द cerebrum. So the part of the brain, it will be divided in cerebrum, cerebellum or brainstem. So first we will deal with cerebrum. So it is the largest section of the brain. It is located in the upper portion of the brain and is the area that process thought, judgment, memory, problem solving and language. मतलब जो cerebrum है, it is the largest section of the brain. brain का सबसे ज्यादा part जो है वो कौन कवर करता है, it will be covered by the cerebrum and it is located and it will be present in the upper portion of the brain. And what is the function of this area, that process thought, मतलब if that area which will be proper functioning, in that time only the person which will be able to do the proper thought, judgment, memory, problem solving and language. The outer layer of the cerebrum is the cerebral cortex which is composed of folds of gray matter. मतलब जो outer layer है, cerebrum का जो outer layer है, is that is called as a cerebral cortex which is composed, means which is made up of fold of gray matter. ये gray matter के folding से बना हुआ होता है. This cerebrum is subdivided into the left and right halves called a cerebral hemisphere. और ये जो cerebrum है, it will be divided in two part, that is left and right. Each hemisphere has 4 lobes. और हर hemisphere means right or left hemisphere, they have 4 lobes. So these are the lobes of cerebral hemisphere.
So in this there will be, first is the frontal lobe. This is frontal lobe. This is parietal lobe. This one is parietal lobe. This is occipital lobe, and this is temporal lobe, and this is insula. So there will be, basically there will be 4 lobes. First is the frontal, second is the parietal, third one is the temporal, and fourth one is the occipital lobe. So we will deal one by one. So frontal lobe. The frontal lobe is the area of the brain responsible for higher cognition function. Means it will be responsible for the cognition function in our बॉडी. हमारे बॉडी में जो कॉग्निशन का फंक्शन है, कॉग्निशन फंक्शन मीन्स जो प्रॉब्लम सॉल्विंग होता है, स्पॉन्टेनिटी होती है, अपने आप हम क्या काम कर सकते हैं, मेमोरी है, लैंग्वेज है, मोटिवेशन है, जजमेंट है, impulse control है, social and sexual behavior, these all are comes under the cognitive functions. So the frontal lobe which will be responsible for these all things. So if the frontal lobe which will be affected, in that time the patient is also having these all problems. Then next is the temporal lobe. Temporal lobe plays a role in emotions and is also responsible for smelling, tasting, perception, memory, understanding, music, aggressiveness, and sexual behavior. Then next is this one is temporal lobe. So the temporal lobe plays a role in emotions. Means ये किसके लिए responsible है? It will be responsible for playing an important role in our emotion. ये हमारे emotion के लिए responsible होता है, because in human being we have emotions. Emotion means कभी हम खुश हो जाते हैं, कभी हम दुखी हो जाते हैं, कभी हम डिप्रेस हो जाते हैं. So this comes under this is how it will be work. It will be work in our body with the help of this temporal lobe only. So in this it will be responsible for, और ये किस लिए responsible है? It will be also responsible for smelling. मतलब अगर हमारा temporal lobe ठीक है, damage नहीं है, कुछ भी problem नहीं है, तो हम proper smell करेंगे. जो हमारा taste है उसको हम कर सकते हैं. Perception हो गया, हमारा memory अच्छा होगा, हमारा एग्रेसिवनेस जो है वो, अंडरस्टैंडिंग म्यूजिक को हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं. देन सेक्सुअल बिहेवियर. द टेम्पोरल लोब आल्सो कंटेन्स द लैंग्वेज एरिया ऑफ द ब्रेन. और जो टेम्पोरल लोब है, इट विल बी आल्सो रेस्पॉन्सिबल फॉर द लैंग्वेज एरिया ऑफ द ब्रेन. हमारा ब्रेन के लैंग्वेज एरिया से ये कनेक्टेड रहता है. इफ द टेम्पोरल लोब विच विल बी अफेक्टेड और एनी क्लॉट फॉर्म in the temporal lobe, in that time the person's language which will be also affected. Then next is the parietal lobe. The parietal lobe plays a role in our sensation. Sensation means touch, smell or taste. मतलब ये जो parietal lobe है, it will be responsible for sensation. अगर हमारे body में हम if our parietal lobe which will be affected, in that time we will not feel any sensation. हम कोई भी sensation फील नहीं कर पाएंगे. हमको कोई टच करेगा उसको हम फील नहीं कर पाएंगे, कुछ स्मेल नहीं आएगा हमको, कुछ टेस्ट नहीं आएगा. इट ऑल्सो प्रोसेस सेंसरी एंड स्पेटियल अवेयरनेस एंड इज अ की कंपोनेंट इन आई, हैंड और कोऑर्डिनेशन एंड आर्म मूवमेंट. मतलब ये और किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है? इट विल बी ऑल्सो रेस्पॉन्सिबल फॉर आई and it will be also eye or hand coordination. Means we have 2 eyes, we have 2 hands, so we have to maintain the coordination in between the right or left hand, right or left arm, then right or left eye. So if the parietal lobe which will be affected, in that time the person is not able to maintaining the coordination in between the eyes, in between the hand or in between the arms. Then next is the occipital lobe. So the occipital lobe, this one is occipital lobe. So the occipital lobe is at the rear of the brain and control vision and recognition. मतलब ये किसके लिए responsible है? The occipital lobe which will be responsible for the vision. If the patient is having the problem of this occipital lobe damage, in that condition the patient vision which will be also लॉस्ट. मतलब पेशेंट का जो विजन है वो लॉस हो सकता है. विजन को ये क्या करता है? कंट्रोल करता है. बट if it will be damaged, so in that condition it will be also affecting the person's vision. Then next is the functions of cerebrum.
So in function of cerebrum it will be interpreting impulses, मतलब हमारे जो ब्रेन में जो impulses हैं उनको interpretate करता है. Then initiating voluntary movements, हमारे जो voluntary movements है जो हम खुद करते हैं उसको ये इनिशिएट करता है. हमको कब हैंड मूवमेंट करना है, हमको कब चलना है, मतलब हम तभी वर्क कर सकते हैं जब हमारा जो सेरिब्रम है वो प्रॉपर फंक्शन कर रहा है. लाइक इफ द पेशेंट इज हैविंग द प्रॉब्लम ऑफ सेरिब्रोवेस्कुलर एक्सीडेंट, अगर सेरिब्रोवेस्कुलर एक्सीडेंट हो गया है पेशेंट को, अगर पेशेंट का ब्रेन जो है वो डैमेज हो गया है, सो इन दैट कंडीशन द पेशेंट इज हैविंग द प्रॉब्लम ऑफ अनकॉन्शियस. पेशेंट अनकॉन्शियस हो जाएगा, पेशेंट के बॉडी में जो वॉलेंटरी मूवमेंट होने चाहिए वो नहीं हो पाएंगे, पेशेंट बेड रिटर्न हो जाएगा. क्यों हो रहा है ये सब? बिकॉज द पेशेंट्स ब्रेन विच विल बी नॉट प्रॉपर फंक्शनिंग. देन इट विल बी ऑल्सो स्टोरिंग इंफॉर्मेशन एज मेमोरी. जैसे हमारे अंदर बहुत सारी ऐसी मेमोरीज होती है, मेमोरीज सच एज हमसे कोई पूछेगा कि हम बचपन में कौन से स्कूल में थे वो हमको पता होता है, हमारी कुछ ऐसी मेमोरीज होती है वो हमको पता होता है. सो इट विल बी स्टोरिंग मीन्स दिस सेरिब्रम विच विल बी स्टोरिंग द इन मेमोरी जो इंफॉर्मेशन है उसको स्टोर करके रखता है. रिट्राइविंग स्टोर इंफॉर्मेशन एंड इट विल बी ऑल्सो स्टोर द इंफॉर्मेशन को भी ये स्टोर करके रखता है. देन इट विल सी of intelligence means if the person is having the if their brain or the cerebrum which will be proper functioning, अगर cerebrum जो है वो proper functioning कर रहा है, so in that condition it will be seat of intelligence. Means every individual they have different intelligence, they have different personality, so it will be depend upon the means quality of the brain. मतलब वो brain कितना उसको grasp किया है या कितना वो ज्यादा develop हुआ है उस पर ये depend करता है. Then next is the reasoning. Reasoning means the action of thinking about something in logical. मतलब बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं दे विल टॉक लॉजिकल थिंग्स, मतलब वो लोग कैसे करते हैं लॉजिकल और सेंसिबल वे में बात करते हैं, और कुछ लोग कैसे कुछ भी बोलते रहते हैं. सो इट विल बी डिपेंड अपॉन द रीजनिंग, इट विल बी डिपेंड अपॉन द सेरिब्रम. अगर हमारा सेरिब्रम हमारा ब्रेन प्रॉपर फंक्शन कर रहा है, सो इन दैट टाइम ओनली वी विल थिंक प्रॉपरली एंड वी विल टॉक अ लॉजिकल थिंग्स. मतलब हम लोग लॉजिकल थिंग्स सेंसिबल वे में हम लोग बात करेंगे, अदरवाइज क्या होगा हम कुछ भी बोलते रहेंगे. सो दीज आर द फंक्शंस व्हिच विल बी प्रेजेंट इन द cerebrum. So today we have discussed only these all things. Means we have discussed what is nervous system, what are the general function of the nervous system, and what are the classification of nervous system. So there will be major two classifications. Then the brain, then we will start from the brain. So in brain the first is the cerebrum, then cerebellum, then brainstem. So first today we have discussed about the cerebrum. Then in next class we will discuss about cerebellum and this brainstem. Then brainstem is again divided in 3 parts. So we will discuss in next class. So thank you.